Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello my dear students, in my previous video I have discussed on the topic types of relations. Today I will work out some problems of exercise 1.1. अगर आपने मैंने जो लास्ट में वीडियो बनाया है उसको नहीं देखे तो काइंडली उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए पहले हम लोग काल वाला जो टॉपिक था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या था? इफ़ ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव देन द रिलेशन इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिविटी का कंडीशन क्या था? रिफ्लेक्सिव का कंडीशन था A, A must be belongs to the relation R for all A belongs to the given set A. This is the conditions of reflexivity. Then symmetric का condition क्या है? Symmetric, if A, B is an element of R and which implies that B, A also an element of R for A, B belongs to A. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है then the relation is symmetric. Okay, this is one, two. And the third condition is if A, B belongs to R, BC belongs to R implies that A, C belongs to R for A, B, C belongs to A. Then the relation is transitive. And if a relation is reflexive, symmetric and transitive, then the relation is said to be an equivalence relation. Okay? Show that the relation are in the set A where A contains the element 1, 2, 3, 4, 5 given by the relation R, A, B such that modulus of A minus B is even is an equivalence relation. First we will show it is an equivalence relation. तो equivalence relation show करने के लिए हम लोग को क्या show करना है? The relation is reflexive, symmetric and transitive. Okay, first we will show it is a reflexive relation. Okay, तो solution देख लीजिए। रिफ्लेक्सिविटी, ओके। तो रिफ्लेक्सिविटी का कंडीशन क्या था? A, A मस्ट बी बिलोंग्स टू द रिलेशन R. तो देख लीजिए, हम पहले कंडीशन को लिख लेंगे। मॉडुलस ऑफ A माइनस B इज इवन होने से A, B बिलोंग्स टू R होता है। अगर modulus of A minus B is even then A, B belongs to R. Okay. तो A, A belongs to R होने के लिए क्या होना पड़ेगा? A, A belongs to R. That is, if we replace B by A, B को A से रिप्लेस करने से जो मिलता है वो अगर इवन नंबर होता है then A, A must be belongs to R. तो देख लीजिए, मॉडुलस ऑफ A माइनस A इज इक्वल टू व्हाट? मॉडुलस ऑफ A माइनस A इज 0 ऑब्वियसली व्हिच इज इवन. सो इट satisfy this condition and which implies that A, A belongs to R for all A belongs to A. Therefore R is reflexive. Therefore R is reflexive. Okay. Okay, आप लोग देख लीजिए इसको। Therefore R is reflexive. Next we'll examine whether it is symmetric or not. Okay. Then symmetrivity. Okay. अभी सिमेट्रिक का जो कंडीशन है उसको हम लोग एक बार याद करना है।
सिमेट्री का कंडीशन मैं राइट साइड में लिख रहा हूँ. सिमेट्री का कंडीशन, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर implies that b comma a belongs to r, then the relation r is symmetric. इसका मतलब we are to assume a comma b belongs to r. Here the condition, if means we have to assume it, we have to consider that the element a comma b belongs to r, and we have to show that b comma a is an element of r. Okay, a b, इसका देखिए b comma a, it is the, you can say mirror image, a comma b and b comma a. Okay, so we'll consider let a comma b belongs to r be any element for a b is element of a. Therefore, when a comma b belongs to r, therefore modulus of a minus b is even. Okay. If you interchange a and b, a minus b का प्लेस में क्या हो जाएगा, b minus a. Modulus of a minus b and modulus of b minus a, they are same, they are equal, so it remains same only, is even, and which implies that b comma a belongs to r. And so r is symmetric. This is the condition of symmetricity. Okay. Okay, next I will show r is transitive also. तो transitive का condition क्या है, transitivity. ट्रांजिटिविटी का कंडीशन एक बार याद कीजिए. वी हैव टू कंसीडर लेट ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर बी एनी two elements, be any two elements where A, B, C are the elements of A, for A, B, C belongs to A. Okay. Now A comma B belongs to R, it implies that modulus of A minus B is even, and यहाँ से modulus हम हटा देंगे, फिर भी इसका नेचर सेम रहेगा, A B is even. Okay. Next B comma C belongs to R, B comma C belongs to R, it means modulus of B minus C is even. Modulus of B minus C is even. Okay. तो यहाँ से modulus हम लोग हटा देंगे तो B minus C is even. Okay. But we have to show modulus of A minus C is also even. Okay. We have A minus C को हम क्या लिख सकते हैं, A minus B plus B minus C. Okay, minus B plus B cancel, the value remains same, A minus C. Okay, A minus B is even, फिर B minus C is even, it is an even plus another even, तो sum of two even is sum of two even numbers is again an even number.
So MNS is even, which implies that modulus of MNS is even. Therefore, we can write A comma C belongs to R. Hence, R is transitive. Therefore, R is transitive. Okay, R is transitive. So, we found that R is reflexive, symmetric, and transitive. Thus, R is an equivalence. R is an equivalence relation. Okay, this is the first part of the question number 8. Okay, second part of the question is show that all the elements of 1, 3, 5 are related to each other and all the elements of 2, 4 are also related to each other. Okay, तो हम लोगों को रिलेशन इट वाज गिवन A minus modulus of A minus B is even. Okay, first you see the first set which contain the elements 1, 3, 5. तो 1 elements का साथ देखेंगे. Here you see since 1 minus 1 it is 0, so it is even, which is even. So 1 is related to 1. 1 and 3, 1 minus 3 it is 2, which is also even. So 1 is related to 3. Next 1 minus 5 it is 4, which is even. So 1 is related to 5. Next we start with 3. 3 minus 1 it is 2, which is even. Next 3 और 3 का साथ देखिए. 3 minus 3 which is even. Next 3 and 5 equal to 2, which is even. So 3 is related to 5. So next for the elements 5, हम 5 के लिए देखेंगे क्या होता है. Whether 5 is related to 1 or not. You see 5 minus 1 it is 4. 5 minus 1 is 4, which is even. So 5 is related to 1. 5 and 3 देख लेंगे. 5 minus 3 it is 2, which is also even. So 5 is related to 3. Next 5 minus 5 it is 0, which is even. So 5 is also related to 5. तो क्या देखें हम लोग? Every element of the set 1, 3, 5 is related to each element. Hence, all the elements of, therefore, all the elements of 1, 3, 5 are related to each other. Therefore, all the elements of 1, 3, 5 are related to each other. Okay. Next, we will see for the set which contain the elements 2 and 4. Okay. अभी हमने क्या देंगे, ये जो सेट है जो 2, 4 एलिमेंट्स है जिसमें, वो देखेंगे क्या होता है, इसका सब एलिमेंट्स सबका साथ रिलेटेड है और नहीं है उसको अभी देख लेंगे. ओके. 2, 4 फर्स्ट वी सी फॉर द एलिमेंट्स 2 एंड 2 का साथ रिलेटेड होता है और नहीं होता है, देख लीजिए. 2 minus 2
which 0 which is even, so 2 is related to 2. Next 2 and 4, 2 minus 4, it is also 2 which is even, therefore 2 is related to 4. Next for 4, 4 minus 2, it is 2 which is even, so 4 is related to 2. Next 4 का साथ 4, 4 minus 4 is equal to 0 which is also even. Okay, therefore all the elements of 2 4 are related to each other. Okay. Third part of the question is we have to show that no element of the set 1 3 5 is related to any element of the set 2 4. Okay, तो 1 3 5 इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट का किसी एलिमेंट से भी इसका रिलेशन नहीं है, वही शो करना है. तो फर्स्ट हम ये 1 एंड 2 का साथ देख लेंगे रिलेशन. सिंस 1 minus 2 which is 1 which is not even, which is odd, that is not even, so 1 is not related to 2. Next will 1 and 4 का साथ देख लेंगे. 1 minus 4 that is it is 3 which is odd, so 1 is not related to 4. Next 3 and 2, 3 minus 2 1 which is odd, so 3 is also not related to 2. Next 3 4, it is 1 which is odd. Next 5 and 2, 5 minus 2 that is 3 which is odd. It's 5 minus 4 1 which is odd. So no elements of, therefore no elements of 1 3 5 is related to any element of two 4. Okay. Question number 12. Show that the relation R defined in the set A of all triangles as R is equal to T1, T2 such that T1 is similar to T2 is equivalence relation. So first of all we need to show that it is an equivalence relation where A is the set of all triangles. A क्या है? A the set of all triangles. Okay, we need to show that R is an equivalence relation. So first of all we have to prove R is reflexive. So first reflexivity. Okay, reflexivity के लिए हम लोग को क्या शो करना है? For every element T belongs to A, we need to prove that T, T belongs to A. और T, T belongs to A कब होगा? If T is similar to T, where T is a triangle. We know that every triangle is similar to the triangle itself. That is, for every
T belongs to A, T is similar to T, which implies that T comma T belongs to R. Hence, R is reflexive. Okay, R is reflexive. Very simple and easy. You just remember the conditions of reflexivity, symmetricity and transitivity. अगर हम कोई भी रिलेशंस को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव शो कर सकता है, देन द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन. तो फर्स्ट हम लोग रिफ्लेक्सिविटी शो किया है. ओके, द नेक्स्ट कंडीशन इज सिमेट्रिविटी. ओके, इसको मैं रफ कर देता हूँ. नेक्स्ट इज सिमेट्रिविटी. सिमेट्रिविटी. ओके, तो सिमेट्रिविटी शो करने के लिए हम लोगों को क्या करना है? पहले वी आर टू एज्यूम वन एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन, वन एलिमेंट्स. तो हम लोग एज्यूम करेंगे लेट T1, T2 belongs to R, B, any element for T1, T2 belongs to A. ओके, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें जब हम लोग ब्रैकेट दे देंगे, ब्रैकेट देने से ये ऑर्डर्ड पेयर हो जाता है. इसका मतलब है एक सिंगल एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन R. जब हम लोग ब्रैकेट हटा देंगे तो ये अलग अलग एलिमेंट्स है, T1 एंड T2, दे आर डिफरेंट एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेट A. ओके, यू मस्ट रिमेंबर इट. ओके, तो हमने क्या एज्यूम किया है, क्या कंसिडर किया है? T1, T2 इज एन एलिमेंट ऑफ द रिलेशन R, एंड नाउ वी नीड टू शो दैट T2, T1 बिलोंग्स टू R. इसका मतलब इसका जो मिरर इमेज एलिमेंट है, मिरर इमेज एलिमेंट है, वो R का एलिमेंट होगा. ओके, तो T1, T2 belongs to R. It implies that T1 is similar to T2. Okay, triangle T1 is similar to triangle T2. इसका मतलब T2 is also similar to T1. एक ही बात है, T1 similar to T2 and T2 is similar to T1. The thing is same. So T2 is similar to T1. ओके, तो जस्ट हमने क्या किया, इसको T1 एंड T2 को इंटरचेंज किया है. तो भी जो कंडीशंस है, द कंडीशंस रिमेन अनचेंज्ड. ओके, सो T2, T1 belongs to R, and which implies that R is symmetric. R is symmetric. Okay. Okay, this is R is symmetric, and the last condition is transitive. अभी हम लोगों को R क्या शो करना है? R is transitive. Okay, next we need to show R is transitive. Transitivity. Okay, transitive शो करने के लिए we need to consider two elements of the relation. Okay, तो हमने assume करेंगे let T1, T2 and इसमें जो सेकेंड कंपोनेंट है, फर्स्ट एलिमेंट्स का सेकेंड कंपोनेंट एंड सेकेंड एलिमेंट्स का फर्स्ट कंपोनेंट सेम सपोज करना, सेम होना चाहिए. इसमें T2, T3, B any two elements, okay, for T1, T2, T3 belongs to A. Okay,
तो फर्स्ट एलिमेंट जो है T1, T2, इसको हम पहले कंसिडर करेंगे। T1, T2 belongs to R implies that T1, T2 belongs to R implies that T1 is similar to T2. T1 is similar to T2. Okay. Next element T2, T3 belongs to R implies that T2 is similar to T3. Okay. Now you see this. Now you see these two sentences. T1 is similar to T2. फिर T2 is similar to T3. It means T1 is similar to T3, which implies that T1 is similar to T3. So T1, T3 belongs to R. Therefore R is transitive. Therefore R is transitive. तो R रिलेशन ने तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। ओके, thus R is an equivalence relation. Equivalence relation. R is an equivalence relation. Okay, the second part of the question is consider the right angle triangles T1 with sides 3, 4, 5, T2 with sides 5, 12, 13, T3 with sides 6, 8 and 10. Which triangles among T1, T2 and T3 are related? Okay, हम लोग को क्या देखना है, ये जो ट्राइंगल्स T1, T2, T3 ये तीन ट्राइंगल्स है जिसका साइड्स दे दिया है, इसमें कौन दो ट्राइंगल्स सिमिलर है। तो सिमिलर होने के लिए कौन दो ट्राइंगल्स रिलेटेड है, तो रिलेटेड होने के लिए क्या होना चाहिए, दो ट्राइंगल सिमिलर होना चाहिए, क्योंकि इसमें कंडीशंस दिया है द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके, तो इसमें देखिए T1, T2, T3 इन द ट्राइंगल्स T1, T2 एंड T3, तो वी हैव सीन दैट इन ट्राइंगल्स T1 and T3 the corresponding sides are in proportion. Corresponding sides are in proportion, and we know that if in two triangles corresponding sides are in proportion, then they are similar. Okay, so here we have seen that in triangles T1 and T3, the corresponding sides are in proportion. Okay, therefore T1 is similar to T3. T1 is similar to T3. करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन देख लीजिए, अभी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे प्रोपोर्शन हो रहा है, देखिए 3 डिवाइडेड बाई 6, 4 डिवाइडेड बाई 8, 5 डिवाइडेड बाई 10, देखिए ऑल आर इन प्रोपोर्शन, 3/6 हाफ, इसमें भी हाफ, इसमें भी हाफ. सो T1 इज सिमिलर टू T3. इट मीन्स T1 is related to 2, 3. Okay, it's very simple and easy.